हाय बेस्टीज, कैसे हैं सब लोग। मैंने आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं ट्राई करूंगी स्पाइसी पोटैटो नूडल्स। और मैंने एक कोरियन लड़की की एक वीडियो देखी थी और मैं ना उससे ही देखकर ना वो मैं बना रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द तो बेस्टी, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम कलेक्ट करते हैं। लेट्स गो। Potatoes. Let's peel them. Besties, we are done with peeling. Let's cut them. बेस्टीज, मैंने इनको कट भी कर दिया है। अभी मैं इनको वॉश करके फिर ना इसमें बॉईल करने के लिए डालूंगी। अभी मैंने इनको वॉश कर दिया है और अभी ये हम वाटर डालेंगे बॉईल करने के लिए। व्हाट है अभी ये बॉईल हो रहे हैं। इनको तकरीबन 18 या 20 मिनट्स के लिए इनको बॉईल करने के लिए रखा है। जब तक के बॉईल हैं मैं फिर बोलता हूँ आपसे। बेस्टीज, मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी। पहले मुझे इस पानी को गर्म करना था, फिर मुझे पोटैटोज डालने थे, पर मैंने गलती कर दी। अब क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ी और ज़्यादा देर लगेगी। तो जब तक ये बॉईल है थोड़ी सी बैक लगती है। गुड। Add some salt. तो अभी जो इसने पॉट से निकाला, तो अभी मैं भी इस पॉट से ही निकालूंगी। 15 minutes are done. So besties, now let's smash them. Let's mix them. Mixy. So इनको परफेक्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं, क्योंकि ये तो अभी प्रॉपर तरीके से डो रेडी हो चुका है। अभी मैं इनको क्यूब्स करके काटूंगी। तो अभी मैंने इनके पीसेस कर दिए हैं। देखिए, ऐसे हमारी उंगली जितना हो जाए ना, ऐसे करना है। देखिए बन गया। अरे ये तो स्नैक की तरह लग रहा है।
नूडल्स कुछ इस तरह बनी है और कुछ नूडल्स इस तरह बनी है। अभी ये पानी बॉयल हो रहा है, फिर हम ये वाली इसके अंदर डालेंगे, फिर बाकी का प्रोसेस। गाइस ये तो टूट गई। Look at it. सारी टूट गई। अभी हम इसमें थोड़ी सी गार्लिक ऐड करेंगे। ऐड सम गार्लिक। और ये जो है ये डालें अभी हम। Now add some sauce. सॉस डालेंगे। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, ये वाला अब गरम होगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे। So besties, ये ऑयल हो चुका है इसके अंदर। और भी थोड़ा सॉस डालते हैं, थोड़ा तीखा लग रहा है। Yummy!